Yes, good morning, beta. Let's continue with the chapter playing with number. Yesterday we were doing, yesterday we have discussed, I think, two derivations of a two-digit number. If two-digit number is added to its reverse, then the formula is AB plus BA is equal to 11 times the sum of the digits. And if we will take Ma'am, we have done exercise 16.1 addition sums. Yes. Yes, if we take the difference of the two-digit number by reversing the digit AB minus BA, then the answer will be 9 times A minus B. These two formulas we have derived, and even three-digit formula we have also done before the vacations. So we will discuss later on. So let's continue with the multiplication sum. Yesterday we have done addition sums to find the letters for digits. Letters are given and we have replaced the letters with the digit. Now let's start with the multiplication sum where the digits are to be written for letters. So exercise 16.1, question number 3. Now this is the third question. First two questions are of addition. This is the third question. A multiplied by A will give you again A. Means you have to write the same digit, and after multiplication the digit here should be same. If I write A as 1, 1 ones are 1, 1 ones are 1. But we want 9 here. We want 9 here. So it's not possible to take A as 1. So this is not appropriate result. So you can't take A as 1. If you write 2 here, this will be 2 2s are 4. So here A should come as 2, but it is 4. So this is again not appropriate result. So if I write 3, 3 3s are 9. We want, if I write 3 here, the in the answer 3 should be there. So it's not okay. So if I write 4 4s are, then it will give you 4 4s are 16. So you are getting 6 here. So again it's not correct. If I take 5 here, 5 5s are 25, 2, 5 ones are 5 plus 2 7. But what we want here is we want 9. We want 9. So again this is not appropriate. So you can take 6. If I take 6, 6 6 are 36. 6 ones are 6 plus 3 9. So this is matching with the given situation. So if I take A as 6, then we are getting A as 6 everywhere at the 3 places, and we are getting 9 at the 10th place. So this result is your appropriate. A here is 6. So this one is correct. You can show each and every result, but if you directly know the answer, so you can show this last step also. No need to do all these steps. ठीक है, अगर मैंने आपके लिए इसलिए चेक किया because we are using trial method. So by trial method you will be easily come to know that how it is possible to get the correct answer. So one by one I have written 1, 2, 3, 4. Then we come to the conclusion that A will be your 6. So if you know the answer, you can write directly this last. No need to write all the things. Okay. And if you will show each and every step, then it will be okay. No marks will be deducted. ठीक है, तब भी चलेगा. Any doubt in this? Any doubt? Okay. Now let's start with the next multiplication part. Let me check which is the next multiplication question. That is your question number 5. A, B multiply by 3 gives you CA
Now here, which digit should be written at the place of B when you multiply 3 with B? The same digit you will be getting for B here, and 2-digit number A will be same at both the places. So again, start checking. If I write 0 here, 3 zeros are 0, तो आप देखो यहाँ पे 0 लिखा है, ये भी 0 आ रहा है, तो चलेगा. अब आप यहाँ पे कौन सा नंबर लिखो? अगर आप 1 लिखते हो, 3 ones are 3, it's not okay. Why it is not okay? Because we want 2-digit number as your answer, so 1 will not work. If you write 2, 3 twos are 6, which is again single digit. If you write 3, 3 threes are 9, which is again single digit. If you write 4, 3 fours are 12. But A should be same. A should be same. So that means A cannot be 4. Got it? अगर आप 4 लिखते हो, 3 fours are 12. 12 आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ जो A आ रहा है 4, यहाँ पर भी 4 आना चाहिए. तो ये ओके नहीं है ना? तो अब आप क्या करोगे? A की जगह 5 लेके देखो. 3 5s are 15. ये सेम आ रहा है. A की वैल्यू 5 ली थी. Again you are getting 5 as answer. So that means this will work. So here C is your 1, A is your 5, and B is your 0. Is it okay? Any problem? Any doubt? अब चेकिंग के लिए ट्रायल मेथड से जितने मर्जी शो कर दो, कोई भी रॉन्ग नहीं है, बट यू हैव टू रीच एट द करेक्ट आंसर. आफ्टर गेटिंग द करेक्ट आंसर, यू विल राइट ऑल द alphabets and their related digits. Okay, clear? सेम ही लग रहा है ये. यहाँ 3 था, यहाँ 5 है, बाकी सब सेम है. यहाँ 3 था ना पिछले क्वेश्चन में, इसमें 5 है. रेस्ट ऑल द थिंग्स आर सेम. तो करते हैं स्टार्ट. वैसे ही कर लेते हैं, एक बार 0 ले लेते हैं B को. 5 zeros are 0. ठीक है. Now we want 2-digit number here, and the digit at the second place must be same. So if I write, you can check. 5 ones are 5, single digit not work. 2 लिखते हो, 5 twos are 10, not same, क्योंकि यहाँ A 2 है, वहाँ 0 आ रहा है. 3 लेते हो, 5 threes are 15. यहाँ 3 था, यहाँ 5 आ रहा है, it will not work. 4 लेते हो, 4 5s are 20, 0 आ रहा है, नहीं चलेगा. 5 5s are 25. So here you have taken A as 5, and again you are getting here A as 5, so this will work. So A is 5, B is 0, and C is 2. आप जितने मर्जी ट्राई करके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप 4 बार ट्राई करो, 5 बार ट्राई करो, इट विल not deduct your marks, but you have to reach at the correct answer. Now, from where you will start? If you write B as 1, तो 6 ones are 6. But हमारे B की वैल्यू क्या है? 1. 1 should come here. तो ये it will not work. अगर आप 2 लेते हो, 6 twos are 12. 2 आ रहा है, चलेगा? चलेगा ना? चलेगा कि नहीं? देखो, आपको एक बात बताते हैं. यहाँ पे 2 लिया, ये 2 आ गया, तो ये भी 2, ये भी 2. तो आंसर बन गया 222. ठीक है, ये आपका आंसर बन गया. अब यहाँ देखो, अब आप एक काम करो,
आप ये देखो, ये 2 डिजिट नंबर है, उसको 6 से मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। आप 2 को 6 से डिवाइड करके देखो, आपका आंसर आता है? करके देखो डिवाइड, आप डिवाइड करके देखो, आपको 2 डिजिट ये आंसर मिलता है? अगर मिल गया तो करेक्ट है, नहीं मिला तो इसका मतलब ये रॉन्ग है। ठीक है, करके देखें। 6 3 जा 18, बच गया 4, 6 7 जा 42, 37 आ रहा है आंसर। लेकिन हमारी बी की वैल्यू क्या है? 2, यहाँ तो 7 आ रहा है, इसका मतलब इट विल नॉट वर्क। इसका मतलब बी कैन नॉट बी 2। इज इट ओके? हमने क्या किया, बी को पहले 1 लिखा, नहीं आ रहा, बी को 2 लिख लिया, जो 2 लिखा वही यहाँ आएगा, 2 2 2, आपका आंसर आ रहा है 222। आपने 222 को 6 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 37। बट अकॉर्डिंग टू अस what should be there? B should be 2, but here we are getting the unit digit as 7. So 37 can't be there. इसका मतलब B cannot be 2, तो ये तो हो गया रॉन्ग। ठीक है, अब सेकंड ट्राई करते हैं। अगर आप यहाँ देखो, अगर आप यहाँ 3 लेते हो, 6 3 जा 18, यहाँ 8 आ रहा है, इट विल नॉट वर्क। नेक्स्ट लेते हैं 4, नेक्स्ट ले लेते हैं इसकी जगह 4, 6 4 जा 24, अगर यहाँ पे 4 आ रहा है तो यहाँ पर भी 4 4 आना चाहिए, आंसर आ गया 4 4 4। अगर आप 4 4 4 को 6 से डिवाइड करते हो, 6 7 जा 42, 6 4 जा 24, यहाँ पे 4 था, यहाँ पर भी 4 आ रहा है ना, इसका मतलब दिस विल वर्क। तो ए की वैल्यू आ गई 7, बी की वैल्यू आ गई 4। आप चाहते हो तो हम एक और चेक कर सकते हैं, हम एक और चेक कर लेते हैं। जैसे आपने देखा 2 से नहीं आ रहा, 4 से आ गया, आप 5 चेक कर सकते हो, 6 5 जा 30, तो इट विल नॉट वर्क क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिजिट आ रही है, तो ये नहीं चलेगा। इवन ले लेते हैं नेक्स्ट, 2 से आ रहा था, 2 से आपने चेक कर लिया, 4 से आपने चेक कर लिया, हम 6 से चेक कर लेते हैं। 6 से मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये पता चल रहा है कि 6 6 जा 36, तो यहाँ पे डिजिट सेम आ रही है, तो यहाँ 6 6 आएगा। अब आप 6 6 6 को 6 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 1 1 1, बट द आंसर शुड बी 2 डिजिट नंबर, बट हियर वी आर गेटिंग 3 डिजिट नंबर, सो अगेन इट विल नॉट वर्क। ठीक है, is a 3-digit number, so this cannot be the answer. So we, out of these 3, this option is appropriate. So here A is 7, B is 4, so answer is A is 7, B is 4. ये आपका फर्स्ट ट्रायल है, ये सेकंड, ये थर्ड, एंड आउट ऑफ दीज वी आर रीचिंग एट दिस आंसर, A is 7, B is 4. That's it about the multiplication question. Anything you want to ask? If you have any doubt, you can ask. Now let's start with divisibility test. Have we discussed earlier? नहीं किए? Okay, let's start. Write down the heading, divisibility test. Write down number 1, divisible by 2. Divisible by 2. करे थे? एक मैम ये किया हुआ है। कहाँ तक किया हुआ बेटा बताओ? अकुल किए हुए डिविजिबिलिटी टेस्ट? मैम इस बार ही तो किए ने, पहले किए हुए हैं। भाई पहले पूछ रही हूँ, नहीं इस बार मतलब वेकेशन से पहले। मैम नो, नहीं किए? चलो फिर कर लेते हैं, लिखो, राइट डाउन। मैम नहीं किए थे वो, हमने सिर्फ फॉर्मूलाज करे थे। Write down number 1, divisible by 2. If a number is having even
a number is having 0, 2, 4, 6 and 8 at its last place, if a number is having 0, 2, 4, 6 and 8 at its last place, then the given number is divisible by 2. If a number is having 0, 2, 4, 6 and 8 at its last place, then the given number is divisible by 2. This you all have to write in the fair notebook. If a number is having 0, 2, 4, 6 and 8 at its last place, then the number is divisible by 2. Next is divisibility test of 3. You all know? Did you know about this? If the sum of the digit is divisible by 3, then the given number is divisible by 3. Write down. If the sum of the digits is divisible by 3, if the sum of the digits is divisible by 3, then the given number is divisible by 3. If the sum of the digits is divisible by 3, then the given number is divisible by 3. Next, divisibility test of 4. Yes, who will tell me divisibility test of 4? Navya, Ananya. Yes, Gurdit. Divisibility test of 4. If the last two digit of a number, is divisible by 4, then the given number is divisible by 4. If the last two digit of a number is divisible by 4, then the given number is divisible by 4. Divisibility test of 5. Divisibility test of 5. Ma'am, if the last digit of the number is 5 or 0, then the number is divisible by 5. Yes, exactly. If the last digit of a number is 0 or 5, then the given number is divisible by 5. If the last digit of a number is 0 or 5, then the given number is divisible by 5. Next, divisibility test of 6. क्या होता है 6 का divisibility test? Actually, 6 is having factors of the form 2 and 3. So the number must be divisible by 2 and 3 both. If I give you example 27, 27 is divisible by 3. 3 only, not by 2. Therefore, 27 is not divisible by 6. इसका मतलब the number must be divisible by 2 and 3 both. Got it? Got it, बेटा? 23, 27 3 से divisible है, लेकिन 6 से नहीं है. क्यों? क्योंकि ये 2 से divisible नहीं है. So the number must be divisible by both 2 and 3. Write down divisibility test of 6. If a number is divisible by 2 and 3 both, then the given number is divisible by 6. वैसे आपकी बुक में ये नहीं दिया हुआ, सिर्फ आपको यही करना था 2, 3, 9, 11, 5, बस यही करना था. चलो नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8 का. पता है आपको लास्ट 3 डिजिट अगर डिविजिबल होती हैं, लिख लो 8 का. डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8. If the last 3 digit of a number is divisible by 8,
then the given number is divisible by 8. If the last 3 digits of a number is divisible by 8, then the given number is divisible by 8. Next is divisibility test of 9, which is exactly same as divisibility test of 3. If the sum of the digits is divisible by 9, then the given number is divisible by 9. If the sum of the digits is divisible by 9, then the given number is divisible by 9. Divisibility test of 9 written. If the sum of the digits is divisible by 9, then the given number is divisible by 9. Next is divisibility test of, नहीं आपको रहने दो बस 9 तक ही ठीक है 11 कहानी है रहने दो. 10 का दिया हुआ है, 10 का divisibility test of 10. If the last digit is 0, then the given number is divisible by 10. If the last digit of the number is 0, then the given number is divisible by 10. Okay. Now let's start with the try these on page number 257. Try these given on page number 257. Question number 1. आपको कहता है n is divisible by 5, which leaves 3 as remainder. What might be the unit digit of n? आपको कहते हैं n is divisible by 5. You have to write n as a number which is exactly divisible by 5. Okay. Now, आपको ये पता है 5 का टेबल लिख रहे हैं. 5 divided by 5 is 5. देखो इधर ऐसे लिख सकते हो आप. n एक ऐसा नंबर है जिसको 5 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 3 बचना चाहिए. आपको पता है 5 डिविजिबल है 5 से, 10 डिविजिबल है, 15 डिविजिबल है, 20 डिविजिबल है, 25 डिविजिबल है. All these are divisible by 5. और भी हैं, but I have written just 4, 5. 5 is divisible, but he is saying that after dividing, this number is leaving remainder 3. So add 3, the number will be 8. Add 3, number will become 13. Add 3, it will become 18. Add 3, it will become 23. Add 3, this will become 28. What did you noticed? Have you noticed this? That these all numbers are divisible by 5, but 3 is remainder everywhere. So I have added 3 at every place. So this is your n. This is your n, and its unit place is either 3 or 8. Either 3 or 8. आपको ये पता है ना कि अगर आप 0 को 5 से डिवाइड करते हो, 5 zeros are 0, फिनिश हो गया. अगर आप 5 को डिवाइड करते हो 5 से, 5 ones are 5, फिनिश हो गया. लेकिन ये रिमाइंडर 3 कब बचेगा? जब इसके अंदर 3 प्लस कर दोगे, मतलब 3 और एक्स्ट्रा आ जाएगा इसमें. अगर आप 13 लेते हो, 5 2s are 10, 3 is रिमाइंडर. अगर आप इसकी जगह 18 लेते हो, 5 से डिवाइड करते हो, 5 3s are 15, you are having 3 as remainder. Is it okay? ये आरिश कौन सी इमोजी सेंड कर रहे थे आप? मैम वो थम्स अप करना था, वो साथ वाले इमोजी पर क्लिक हो गया. ठीक है. Now I have written the numbers which are exactly divisible by 5. 3 is added because every number should leave. Right now it's not leaving the remainder, but if you will add 3, then after addition it will must leave remainder as 3. So n has unit digit as 3 or 8. So this is your first question.
Either it will be 3 or 8, both will give you 3 as remainder. Okay, done. Done. Next question is again same. N divided by 5 leaves a remainder 1. So means this time you want 1 as remainder. So earlier we want 3 as remainder, so we have added 3. Now we want 1 as remainder. So all these are the multiples of 5. Let's add 1 to every number. This will give you 6, 11, 16, 21, 26. Now what you have noticed is, now n has a unit digit either 1 or 6. 1 or 6. Okay. आप डिवाइड करके देख लो, 6 को 5 से 1 will be remainder. 11 को डिवाइड करो 5 से 1 will be remainder. 16 को डिवाइड करो 5 से 1 will be remainder. So whenever you are having, we want 1 as remainder, then the unit digit of the number must be 1 or 6. Do the third question, hurry up, which is exactly same. Do the third question. Do the same third question of this same try these. Now in the third question, you want 4 as remainder. So every time you will add 4. Then what will be the unit digit? 4 or 9. Is it so? Is it okay? If you add 4 to every number, every multiple, you will have remainder, you will have n as a unit digit 4 or 9. Now start the another try these that is given on the same page number. On the bottom of this page number 257. One again try these is given. Here the number is exactly multiple of 2. Earlier we are talking about the multiples of 5. Now you have to consider multiples of 2, but we want remainder as 1. Now n is divisible by 2, leaves 1 as remainder. Leaves 1 as remainder. Now you will write multiples of 2, 2, 4. Should I start with 0? Because 0 is a multiple of every number. So better to start with 0. In the previous question also, you can start with 0. I think you should start from 0. You can नहीं, you have to start with 0. ठीक है? तो आप पिछले क्वेश्चन में भी 0 ऐड कर लेना. 5 से स्टार्ट किया था ना? तो पिछले क्वेश्चन में 5 से स्टार्ट करने से पहले 1 कर लेना. तो रिमाइंडर वो यूनिट डिजिट तो 1 और 6 ही आ रही, पर एक ही स्टेप ऐड कर लेना, क्योंकि 0 is a multiple of every number. Now in the same way, write the multiples of 2, 0, 2, 4, 6, 8. Now we want 1 as remainder. Add 1 to every number. All these are multiples of 2. ये multiples of 2 है, ये क्या है? Remainder है, ये क्या है? Plus remainder will give you n. n दे रहा है आपको. क्या मिलेगा? 1, 3, 5, 7, 9. Now what happened is, we had started from the even number, but after adding the remainder, we have reached at the odd number. So you all know that every even number is a multiple of 2, but odd numbers will always leave remainder as 1. Can you tell me why is it so? Why odd numbers, all odd numbers when divided by 2 leaves remainder 1? Can you tell me the appropriate reason for this? Ma'am, because the divisibility of 2 rule says that every number, even number at the end is divisible by 2, and if there is an odd number, then it will leave the remainder of 1.
Yes, exactly. But there is one appropriate term for this because the जो आपने बोला बिल्कुल सेम है, but I am writing in term. आप देखो 2 के जो मल्टीपल्स होते हैं वो 2m टाइप के होते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 2, मतलब जनरल फॉर्म ऑफ इवन नंबर जो होती है वो 2m होती है, तभी ये सारे 2 के मल्टीपल होते हैं. बट द जनरल फॉर्म ऑफ द ऑड नंबर इज 2m plus 1 और यू कैन से 2n plus 1. प्लस 1 का मतलब है मल्टीपल ऑफ 2 plus 1. दैट्स व्हाई इट इज लिविंग रिमाइंडर. ठीक है. जनरल फॉर्म ऑफ द इवन, ये क्वेश्चन आया था पेपर में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर में ना, ये लिखा हुआ है थ्योरी में और वहां से एग्जाम में आ गया था एक बार कि जनरल फॉर्म ऑफ, रिवीजन टेस्ट में आया था, जनरल फॉर्म ऑफ इवन नंबर जो होती है वो 2m 2x 2n कुछ भी ले लो, अल्फाबेट कोई भी ले सकते हो, बट ऑड नंबर की जो जनरल फॉर्म होती है वो 2n plus 1 होती है. तभी तो ये सारे जो हैं दे विल लीव रिमाइंडर 1 ऑन डिवाइडिंग बाय 2. So that's why it happened here. Every multiple of 2 is a even number, but the multiple of 2 plus 1 will give you odd number. So here, what you will write as the answer is n has unit digit 1, 3, 5, 7 or 9. One of this will happen at a time. That's why I have written or. आप किसी एक नंबर को किसी एक टाइम पे डिवाइड करोगे ना, तभी कोई भी डिजिट आ सकती है, आगे जाके 11 आ सकता है, 13, 15, 27, 29, 49, सब में रिमाइंडर 1 ही बचेगा. बट यूनिट डिजिट मस्ट बी 1, 3, 5 और 7 दैट विल लीव रिमाइंडर 1. ठीक है. जरूरी नहीं यही नंबर फिक्स है, यूनिट डिजिट ये हो सकती है, नंबर कैन बी, it can be 99, it can be 55, it can be 43. यूनिट डिजिट फिक्स होगी, नंबर कैन बी चेंज.